So I think in our last lecture we had started with unit number 2. So types of pressure. So basically pressure are basically classified based on the method of reference. Okay. So with what reference you are measuring the pressure. Okay. So first type of pressure is absolute pressure. So if you are measuring the pressure with respect to complete zero or absolute zero. Okay. We know on the earth surface the pressure is atmospheric pressure. Okay. On earth surface the pressure is atmospheric pressure. So this atmospheric pressure is nothing but हमारे सराउंडिंग में जितने भी गैसेस है, ओके, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, टुगेदर इट फॉर्म आवर एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर. तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसका खुद का भी एक वेट है. ओके. सो इसका जो एटमॉस्फेयर का वेट है वो हर बॉडी पे जो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है उस पे एक्ट होता है. ओके. सो वॉट एवर द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्टिंग, ओके, और वॉट एवर द प्रेशर weight per unit area of the atmosphere which is acting on any body on earth surface, that is called as atmospheric pressure. Okay. So atmospheric pressure का value होता है 1.013 bar. Okay. In terms of bar it is 1.013 bar or 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square. Okay. In terms of meter of water. Okay. So in terms of meter of water, that is 10.33 meter of water. Okay, 10.33 meter of water. In case of mercury, it is 76 centimeter of mercury or 760 mm of mercury. Okay, so all these are the values of atmospheric pressure. Okay, so atmospheric pressure क्या है? हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू से, मतलब आप अर्थ के ऑर्बिट के बाहर जाओगे तो वहां पे कंप्लीट वैक्यूम है, एब्सोल्यूट जीरो है. ओके. सो एब्सोल्यूट जीरो से कितना ज्यादा प्रेशर है अर्थ पे, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. सो इफ यू आर मेजरिंग, सपोज दिस इज एनी पॉइंट ए. ओके. दिस इज एनी पॉइंट ए एंड दिस इज एनी पॉइंट बी. ओके. सो सपोज आप पॉइंट ए का प्रेशर मेजर कर रहे हो एंड यू आर मेजरिंग द प्रेशर विथ रेफरेंस टू एब्सोल्यूट जीरो. ओके. सो ये जो वैल्यू रहेगा, so this value is nothing but absolute pressure. So if you are measuring the pressure with reference to absolute zero, so that is called as atmospheric absolute pressure. Okay. Then second one is gauge pressure. So the gauge pressure is simply defined as the pressure which is measured with the help of pressure measuring instrument. Okay. And basically in the gauge pressure, the atmospheric pressure is taken as datum. Okay. आप डेटन या रेफरेंस किसको लोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर गिवन सिस्टम का ज्यादा है आप वो मेजर कर रहे हो, so that is called as gauge pressure. And basically all the pressure measuring instruments, okay, they will give you the value of gauge pressure. Okay. So आप gauge pressure के टाइम क्या अज्यूम करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो अज्यूम करते हो. ओके. और एब्सोल्यूट प्रेशर में एब्सोल्यूट जीरो को जीरो अज्यूम करते हो. Okay, so this is the difference. Then next is vacuum pressure. So if you are measuring the pressure with reference to atmospheric pressure and below atmospheric pressure, okay, आप कोई भी सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बिलो है, कितना कम है, वो मेजर कर रहे हो. So that is called as vacuum pressure. Okay. So in general you can see for this point A, the absolute pressure, this total length is nothing but atmospheric pressure plus gauge pressure. Okay. So for gauge pressure, the value of absolute pressure and gauge pressure relation is absolute pressure equals to atmospheric pressure plus gauge pressure. Okay. And in this case at this point B, okay, आपको point B का absolute pressure निकालना है. So that is nothing but atmospheric pressure minus absolute pressure. Sorry, this atmospheric pressure, इससे आप उसका absolute pressure minus कर दो तो आपको उसका vacuum pressure मिलेगा. Okay. So this is the relation. So I think we had discussed this also in our last lecture. Okay. What are the gauge pressure and absolute pressure at a point 3 meter below the free surface of the liquid, having a density of 1.53 into 10 power 3 kg per meter cube. If the atmospheric pressure is equivalent to 750
750 mm of mercury. The specific gravity of the mercury is 13 and density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, so what is given in this problem that we are supposed to find out the gauge pressure, value of gauge pressure and absolute pressure. Okay, simple है gauge pressure निकालेंगे उसमें atmospheric pressure ऐड कर देंगे तो हमें absolute pressure मिल जाएगा. Okay, at a point 3 meter below. So basically 3 meter is what? This is a depth. So depth is nothing but Z. Okay, so ये liquid surface है. This is point A and the location of this point A is 3 meter below. So Z is or Z1 is 3 meter. Okay, after that rho 1. Okay, वो जो लिक्विड है वो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, जो लिक्विड में ये पॉइंट आप बोल रहे हो ये लिक्विड का डेंसिटी है 1.53 into 10 power 3 kg per meter cube. ओके, एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का वैल्यू है 750 mm of Hg. ओके, सपोज आपको वैल्यू नहीं दिया होता तो आप डायरेक्टली 760 mm ऑफ Hg ले सकते थे, बट यहाँ पे दिया है तो आपको 750 mm ऑफ Hg लेना है. ओके, so convert first of all mm of Hg into meter of Hg, so divide by 1000, so it is 0.75 meter of mercury. Okay, so first of all we know at a depth Z the pressure will be rho gz. Okay, remember यहाँ पे रो कौन सा रो लेंगे, वाटर का. ओके, सॉरी हमारा ऑयल है ना, तो आपको ऑयल का लेना है. ओके, सो यहाँ पे रिमेम्बर ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसमें दिया हमें, मीटर ऑफ मर्क्यूरी में, तो हमें यहाँ पे रो जो लेना है वो मर्क्यूरी का लेना है. ओके, रिमेम्बर द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600. ओके, 13600 kg per meter cube. ओके, kg per meter cube, ये वैल्यू आपको हरदम याद रखना है. डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ये वैल्यू आपको हरदम याद होनी चाहिए. ओके, सो इट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दैट इज specific gravity 13.6 into 1000, so it is 13600. Okay, so atmospheric pressure, okay, it will be 13600 into 9.81 into atmospheric pressure head कितना है 0.75, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली इट विल बी 1.000062 न्यूटन per meter square or 1.00062 bar. Okay, this is the value of atmospheric pressure. Okay, now we are supposed to calculate the pressure at any depth Z, okay, which is 3 meter, और liquid का specific gravity कितना है 1.53 into 10 power 3. Okay, so that pressure will be rho 1 g Z1. अभी ये pressure जो रहेगा, okay, ये pressure आपका gauge pressure रहेगा. Okay, so it will be rho 1. Rho 1 is directly given 1.53 into 1000 into 9.81 value of G into Z1 is 3. Okay, so gauge pressure का value कितना आ गया 45028 Newton per meter square. Okay, after that next is we are supposed to calculate absolute pressure. So remember absolute pressure is gauge pressure plus atmospheric pressure. तो आपको जो 10,000 something है, okay, 10,062 इसमें सॉरी 1,62 इसमें 45,000 ये ऐड कर देना है. ओके, सो द टोटल वैल्यू विल बी 1,45,090 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. We will see our next problem. The pressure measuring system are classified. Okay, now next will be pressure measuring system. Okay, so this pressure measuring system, this is nothing but these are the devices or methods which are used for the measurement of pressure. Okay, so this pressure measuring system are classified into two types. Basically first is manometers and second is mechanical devices. Okay, so manometers, these are nothing, these are the simple devices used for measuring the pressure at any point in the fluid, okay, by balancing it against the same or another column of fluid. 1 minute.
Okay, so manometers are the devices used for pressure measurement. Okay, basically we are going to see in detail the manometers. What are the different types of manometers? Okay, so example are piezometers, YouTube manometers, etc. So you can see this is an example of manometer. So what happens in manometer? Manometers are simple glass tube. Okay, so one point is connected to the point where pressure is to be measured. Okay, so you can see if this pipe is not connected, so on both sides the pressure acting is atmospheric pressure. Okay, so you will observe the level of liquid. This liquid which is filled, this is called as manometric liquid. Okay, manometric liquid. So this manometric liquid, it will have equal levels on both sides. Why? Because on left side the pressure is atmospheric pressure, on right side the pressure is atmospheric pressure. But suppose you will connect it to any pipe. Okay, and the pressure of the pipe, PA, it will be greater than the atmospheric pressure, P atmosphere. Okay, so in this case what will happen, whatever the pressure difference, whatever the pressure difference, PA minus P atmosphere, it will going to act on left side. Okay, left side पे क्या act होगा, आपका जो pressure difference है PA minus P atmosphere. Okay, ये pressure difference act होगा, so basically this level will fall. Okay, or and on the right side, as the pressure of left side is more, so basically right side में level rise होगा. Okay, so basically you are supposed to measure whatever the difference of level. Okay, so basically यहाँ पे क्या हुआ, जितना pressure difference था, whatever the pressure difference PA minus P atmosphere, इसको एक column of fluid, column of fluid is nothing but this is a level of fluid. Okay, ये कोई भी level of fluid और equivalent column of fluid से हम क्या करते हैं, balance करते हैं. Column of liquid, जितना कम pressure difference उतना कम column of fluid. Okay, so basically what is the working principle of manometer? Manometers are the devices in which the pressure measurement is done by balancing any given pressure by equivalent column of fluid. Okay, so this type of devices are simply called as manometer. So example of manometers are piezometers, YouTube manometers, differential YouTube manometer, and so on, which we are going to see in detail. Okay, then second are mechanical gauges. So basically mechanical gauges make the use of some mechanical arrangement. Okay, for example diagram will be there, some belows will be there. Okay, so here whatever the value of pressure which is acting, it is converted into equivalent displacement or some electrical voltages and so on. Okay, so जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना इक्विवेलेंट और उतने प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा और आपको प्रॉपर्टी मेजर करनी है. ओके, तो जितनी वो प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा उसके इक्विवेलेंट प्रेशर रहेगा. ओके, so mechanical gauges are simply devices used for measuring the pressure by balancing the column by some other mechanical arrangements. Okay, so example are diaphragm pressure gauge, Borden pressure gauge, deadweight pressure gauge, below pressure gauge, and so on. Okay, so this is one sample of pressure gauges which are basically used for measuring the pressure. Okay, so first of all we will start with our first type of manometer. Basically आज का जो लेक्चर चल रहा है, okay, this will be also a part of your practical. आपका second practical जो है वो pressure measurement के ऊपर ही है. Okay, तो theory part हम आज cover कर ले रहे हैं. Okay, so basically manometers. So manometers, these are the simple glass tubes whose one end is connected to the point where pressure is to be measured and other point is free to atmosphere. So basically these manometers are further classified into two types: simple manometers and differential manometers. Okay, so simple manometers, these are the simple glass tubes. Okay, it basically consists of a simple glass tube whose one end is connected to the point where pressure is to be measured and other end remains open to atmosphere. Okay, then the most simple type of manometer is called as piezometer. So piezometer is simply a vertical glass tube. Okay, it is simply a glass tube whose one end is connected to the pressure measuring point and other end is free to atmosphere. Now what happens in this case?
okay, as the pressure of system. Okay, this PA, it is greater than the atmospheric pressure, P atmosphere. Okay, so as pressure is more, so whatever the liquid, it will enter the pipe and it will start to rise. अब ये जब liquid rise हो रहा है, तो basically opposite side से atmospheric pressure भी act हो रहा है. Okay, so जैसे now ये pressure जैसे जैसे ऊपर rise होगा, जैसे जैसे liquid ऊपर rise होगा, liquid का weight भी नीचे act हो रहा है. Okay, so liquid का weight भी नीचे act हो रहा है और atmospheric pressure भी उसको oppose कर रहा है. Okay, so जब जो हमारा गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर है, जो प्रेशर डिफरेंस है पी ए माइनस पी एटमोस्फियर, ओके, इसका वैल्यू वेट और ऑपोजिंग प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो उस केस में ये इसका राइज जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, और जितना ज्यादा प्रेशर का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा आपको एच का वैल्यू मिलेगा. ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एच मेजर करना होता है. ओके, इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ लिक्विड बोलते हैं उसको, तो आपको इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ लिक्विड एच मेजर करना होता है, या सिंपली उसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं. सो प्रेशर हेड आपको मेजर करना होता है, एंड यू कैन फाइंड आउट once you measure the pressure head H, so multiply it with specific gravity gamma or rho g. Okay, so rho g H or gamma H, you will get the value of pressure. So pressure equals to rho g H or gamma H. Okay, so in this way you can find out the value of pressure. Okay, so the rise of liquid in the tube corresponds to pressure head. Okay, so if A is the point and where pressure is to be measured, and H is the height of liquid in the piezometer, then pressure at A is rho g H. Already we had discussed. Okay. Then second type of manometer which we are going to see, that is called as U-tube manometer. Now basically this U-tube manometer can be used for both gauge pressure measurement as well as vacuum pressure measurement. Okay, so this U-tube manometer, these are simple glass tubes, okay, bent in the shape of English letter U. So you can see this is the arrangement of U-tube manometers. So these will be the glass tubes of which are bent in the shape of letter U, because one end is connected to the point where pressure is to be measured, okay, while other end is free to atmosphere. Okay, so this other end, it is free to atmosphere while one end is connected to the point. Okay, now basically this can be used for both vacuum pressure measurement as well as gauge pressure measurement. Okay, so we will see this later how we can use this for vacuum pressure measurement. Okay, now what happens initially when the pipe is not connected? So ये आपका U-tube manometer है, आपका U-tube manometer है. Okay, so basically level of liquid on left side and right side, this will be equal. Okay, जो level है left side में और right side में equal रहेगा. Now what will happen, because atmospheric pressure is acting at both ends. Now when you will connect this at any point B, okay, and pressure of B, it is greater than atmospheric pressure. Okay, it is greater than atmospheric pressure. So whatever the pressure difference PB minus P atmosphere, it will going to act on left side. Okay, so left side में liquid का fall होगा. Okay, you can see here left side में liquid का fall हुआ है, and right side में क्या होगा, जितना liquid volume of liquid left side में नीचे fall हुआ है, same volume of liquid will rise on right side. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको H1 measure करना होता है, H2 measure करना होता है, and take the difference H1 minus H2, so that will give you pressure head H. Okay, so this is the method of measuring the pressure using U-tube manometer. Okay, now we will going to derive the equation for calculating the pressure measurement. Okay, so consider any U-tube manometer as shown in the figure. Okay, let H1 is the height of lighter liquid. From we had assumed this AA, any level AA as datum. Okay, so जो आपका point B है, okay, उसका जो liquid, उसमें जो liquid है उसका specific gravity S1 है, lighter liquid. और जो हमारा manometric liquid है, that is a heavier liquid, suppose mercury, जिसका specific gravity S2 है. Okay, so basically if specific gravity is S1, so S1 into 1000, that is we know, if you know the specific gravity of any fluid, okay,
So specific gravity is nothing but ratio of specific weight of liquid upon specific weight of water. So that equals to rho of liquid into G divided by rho of water into G. So G cancel हुआ. So rho is nothing but ये वाटर का हम S से मल्टीप्लाई कर देंगे. So rho of given fluid is nothing but specific gravity into mass density of water. Okay. So density of liquid 1 is nothing but 1000 into S1. Density of heavier liquid is nothing but 1000 into S2. Okay. And let H1 and H2, these are the whatever the level on left side and right side of the limb from datum A. Basically as the pressure now at this point A पे दोनों साइड में लिक्विड सेम है, हेवियर लिक्विड है. सो बेसिकली बाय पास्कल्स लॉ ये दोनों लेवल पे ओके राइट साइड का लेवल ए पे एंड लेफ्ट साइड के लेवल ए पे बेसिकली प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. ओके हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से. सो बेसिकली हम लेफ्ट साइड का प्रेशर लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर पहले फाइंड आउट करेंगे. ओके सो बेसिकली लेफ्ट लिम्ब में क्या हो रहा है, लेफ्ट लिम्ब में जो भी अननोन प्रेशर है पॉइंट का बी, so that pressure is P प्लस आपका जो लाइटर फ्लूइड है. ओके एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम में करेक्शन है, मेक वन करेक्शन. यहाँ पे ये जो लाइटर लिक्विड है, ये लाइटर लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ तक लाइटर लिक्विड है. ओके यहाँ पे गलती से डार्क हो गया है, यहाँ पे लाइटर लिक्विड है पूरा. ओके क्योंकि यहाँ पे पुश हुआ है नीचे, यहाँ पे पूरा लाइटर लिक्विड है. सो बेसिकली लाइटर लिक्विड कहाँ तक है, ए तक है. ओके सो वहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, इट विल बी रो 1 G H1 और B का प्रेशर अननोन है तो हम उस प्रेशर को P बोल रहे हैं. ओके सो इट विल बी P प्लस सी. यहाँ पे जब भी मैनोमीटर में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको प्लस साइन लेना है. ओके और जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो डेटम से तो आपको माइनस साइन. ओके डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस साइन लेना है. सो बेसिकली प्रेशर above AA in left column, so it will be P plus rho 1 G H1. Okay हमने अननोन प्रेशर से स्टार्ट किया, so P प्लस हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, so it is rho 1 G H1. Okay sir okay after that pressure on right side. हाँ रजत को से ज्वाइन होने का ट्राई कर रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए ना सर प्लीज. ओके हेलो हाँ एक मिनिट त्याला सांग परत रिक्वेस्ट सेंड करायचे. रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए फिर से बोलो एक बार, यहाँ दिख नहीं रहा है. यस सर बोलता ओके एक प्रॉब्लेम असा असतो की आपण पीपीटी जेव्हा प्रेझेंट करतो ना तेव्हा कळत नाही ऍक्च्युली तो कोणी रिक्वेस्ट सेंड केली आहे का. ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 1 मिनट, हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. सो लेफ्ट साइड का नोन प्रेशर पी हमें पता नहीं है, सो हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया. सो प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड. ओके सो प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल अननोन प्रेशर पी. हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट बी से. सो दिस विल बी द प्रेशर एट पॉइंट बी. ओके देन बी से हमें कहाँ जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब जाते हैं तो प्लस साइन लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस साइन. ओके सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो प्लस साइन लेते हैं. ओके सो वी विल ऐड हियर. ओके देन हमें कितना डिस्टेंस जाना है, H1. यहाँ पे एक करेक्शन है कि यहाँ पे लाइटर फ्लूइड है पूरा. ओके सो दिस विल बी H1. सो H1 जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कितना ऐड होगा, रो 1 G H1. ओके सो ये लेफ्ट साइड का प्रेशर हो गया. वैसे हम राइट साइड का इक्वेशन लेंगे, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 0 है. ओके सो राइट साइड का इक्वेशन लिखेंगे P right. ओके सो दिस P right is nothing but atmospheric pressure. So atmospheric pressure is 0 प्लस अगेन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ए की तरफ, तो वहां पे फिर से प्लस करेंगे. प्लस अभी यहाँ पे हेवियर फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कितना है, रो 2.
ओके, इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितना जाना है h2. ओके, सो this will be the equation for right side, and basically as per Pascal equation, Pascal's law, this pressure on left side and right side, they are same. Okay, so this p plus rho 1 g h1, okay, rho 1 g h1, this should be equals to rho 2 g h2. Okay, so I think ये already हमने type किया है. Okay, so pressure on left side will be p plus rho 1 g h1, pressure on right side will be rho 2 g h2. Okay, and equating this to pressure, so we will have p plus rho 1 g h1, that equals to rho 2 g h2. Okay, so we can transfer this rho 1 g h1 on right side. Okay, in order to calculate the pressure. So unknown pressure, so unknown pressure of b is nothing but rho 2 g h2 minus rho 1 g h1. Okay, so आप क्या करोगे प्रेशर मेजरमेंट के टाइम, डेंसिटी आपको फ्लूइड की पता रहेंगी, जी का वैल्यू आपको पता रहेगा, आपको h2 और h1 मेजर करना है. ओके, अभी यहाँ पे सपोज सेम फ्लूइड रहता था, वाटर ही रहता था सपोज, तो यहाँ पे रो ऑफ वाटर इंटू जी, रो ऑफ वाटर इंटू जी, तो आप रो जी कॉमन ले लेते थे, h2 माइनस h1 करते थे सिंपली. बट यहाँ पे फ्लूइड डिफरेंट है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंट है, जो हमारा सिस्टम फ्लूइड है वो डिफरेंट है, तो आपको उनके स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करना है रो जी से. ओके, so it is rho g rho 2 gh2 minus rho 1 gh1. Okay, so in this way you can find out the pressure measurement. Similarly, you can find out the pressure measurement of vacuum pressure using YouTube manometer. Okay, so you can see now YouTube manometer में क्या होगा, sorry, what will happen for vacuum pressure measurement. Okay, in this case the pressure of B, okay, it will be less than atmospheric pressure. Atmospheric pressure से ये क्या रहेगा, less रहेगा, because it is vacuum pressure below atmosphere. So in this case यहाँ पे atmospheric pressure का वैल्यू हाई रहेगा, तो atmospheric pressure क्या करेगा, लिक्विड को नीचे पुश करेगा. ओके, और यहाँ पे सिस्टम प्रेशर जो है वो बिलो एटमॉस्फेयर है, तो बेसिकली लेफ्ट साइड में लिक्विड राइज होगा. ओके, तो राइट साइड में क्या होगा, गेज प्रेशर के टाइम राइट साइड में राइज हुआ था, लेफ्ट साइड में फॉल हुआ था. यहाँ पे वाइस वर्सा, लेफ्ट साइड में राइज होगा, राइट साइड में फॉल होगा. ओके, तो बेसिकली इस केस में यू विल ऑब्जर्व लेफ्ट साइड में ही आपको जो आपका हेवियर फ्लूइड है उसका लेवल दिखेगा, एंड लाइटर फ्लूइड का भी लेवल आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा. तो आपको कोई भी डेटम से ओके h2 का वैल्यू मेजर करना है, h1 का वैल्यू मेजर करना है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रो 2 रहेगा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी h2 रहेगा और डेंसिटी रो 2 रहेगा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी s1 रहेगा और डेंसिटी रो 1 रहेगा. ओके, सो अगेन वी विल अप्लाई. ओके, सो हम लेफ्ट साइड में इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी अननोन प्रेशर B. ओके, B का जो प्रेशर है उसको हम P बोलेंगे, P. ओके, देन P से हम नीचे की साइड जाएंगे, सो लेवल कितना है h1, so it will be, and density of that fluid will be rho 1, so it is rho 1 g h1, and you are going downwards, so positive. okay, then फिर से ये लेवल से हम एक ही तरफ मूव करेंगे, तो डिस्टेंस इज h2 and density of the fluid is rho 2, so it is rho 2 g h2, so P plus rho 1 g h1 plus rho 1 g h2, it will be whatever the pressure of left limb, and right side के limb पे pressure कितना रहेगा, atmospheric pressure, so pressure on right side of the limb will be 0. ओके, बिकॉज जितने भी आपके प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, मैनोमीटर वगैरह वगैरह, ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से देते हैं. ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 0 अज्यूम करते हैं. सो एज पर द पास्कल्स लॉ, दिस टू प्रेशर शुड बी सेम, सो रो 2 gh2 प्लस रो 1 gh1 प्लस p, इट शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये रो 2 gh2 एंड रो 1 gh1 को आप राइट साइड में ले जाओ, एंड यू कैन टेक द नेगेटिव साइन कॉमन. Okay, so you will have P equals to minus of bracket rho 2 gh2 plus rho 1 gh1. Okay, so basically here this negative sign indicate the pressure is below atmospheric pressure, okay, or vacuum pressure. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द प्रेशर इज वैक्यूम प्रेशर. सो जब भी आप वैक्यूम प्रेशर मेजर करते हो,
So basically vacuum pressure is denoted by negative sign. Okay, so is the method understood? ओके, बिकॉज आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. ओके, ये आपको डेरिवेशन कैसे डिराइव किया ये समझ में आया होगा. तो आपको अभी आगे जाके हम प्रेशर देखेंगे और प्रेशर के प्रॉब्लम देखेंगे. इसमें 2 प्रेशर, 2 फ्लूइड, 3 फ्लूइड और कितने भी यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किए होते हैं, अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं. तो आपको इस मेथड से डेरिवेशन बनाते आने चाहिए. ओके, सो क्या की पॉइंट्स है डेरिवेशन बनाने के लिए कि जब भी हम नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हम प्लस साइन लेंगे, और जब हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो हम माइनस साइन लेंगे. ओके, और प्रेशर हेड से प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए आपको रो जी से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो ये सिंपल 2-3 रूल्स है, ये आपको याद रखने हैं एंड यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स. ओके, ओके, so we will see the first numerical. The right limb of a simple YouTube manometer containing mercury is open to atmosphere, while the left limb is connected to a point in which the fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of the fluid in the pipe if difference of mercury level if the difference of mercury level in the two limb is 20 centimeter. So in this case the right limb of a okay, so basically सबसे पहले तो एक simple YouTube manometer है. Okay, so this is any simple YouTube manometer. Okay, then containing mercury okay, and is open to the atmosphere. Okay, अभी इसका जो right limb है, right limb ये open to atmosphere है, while left limb is connected to the point where fluid of specific gravity 0.9 is flowing. So basically ये एक point पर connect है. यहाँ पे जो fluid है S1 उसका specific gravity कितना है 0.9. So 0.9 into 1000, तो इसका जो ρ1 है, ρ1 का वैल्यू 900 है. Okay, then the center of the pipe is 12 centimeter below. Okay, the center of the pipe, ये जो सेंटर ऑफ द पाइप है, ये पाइप का जो सेंटर है ये 12 सेंटीमीटर बिलो है. ओके, इट इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन राइट लिम्ब. राइट लिम्ब में जो मर्क्यूरी है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर बिलो है. फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इफ द पाइप डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर. अभी ये दोनों लिम्ब में डिफरेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है. तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर ऑफ पाइप का लेफ्ट लिम्ब से, ये हो गया 20 minus 12, सो दिस इज 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. ओके, डायग्राम अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ है, ऑलरेडी दिया है. ओके, so this is 12 centimeter, this is 20, so this will be 8 centimeter. So H1, okay, remember ये क्या रहेगा हमारा H1 जो हमारा लाइटर फ्लूइड है लेवल A से. तो H1 कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर. एंड H2 क्या रहेगा, H2 रहेगा हमारा राइट लिम्ब का. सो दिस 20 सेंटीमीटर हमारा H2 रहेगा. ओके, so H2 is 20 centimeter and H1 is 8 centimeter. So 8 is nothing but 20 minus 12. Okay, और इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो बिकॉज हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी केजी पर मीटर क्यूब मीटर में ले रहे हो आप. ओके, so H1 is 0.9, so ρ1 is 1000 into 0.9, 900 kg per meter cube. H2 is 13.6 मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का 13600 रहेगा. This is 20 centimeters, so 0.2 meter. H2, H1 is 20 minus 12, so 8 centimeters, 0.08 meter. After that, आपको simply pressure calculate करना है. So हम बोलेंगे pressure in the pipe is P. Okay, then अगेन इक्वेटिंग द इक्वेशन. लेफ्ट साइड का इक्वेशन क्या आएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा P प्लस नीचे जाएंगे सो इट इज ρ1g H1. ओके, ए तक पहुंच गए इक्वल्स टू राइट साइड में क्या रहेगा ρ2g H2. ओके, सो ρ1 P प्लस ρ1g H1 इक्वल्स टू ρ2g H2. ये इक्वेशन आपको बनाते आना चाहिए. ओके, सो put all the values, so P plus 900 into 9.81 into 0.08, that equals to 13.6 into 1000 into 9.81 into 0.2.
Okay, so it's simply calculation आप कैलसी पे कर सकते हो. So it comes out to be 25,977 Newton per meter square. So in this way you can solve any problem. So today we'll stop here. Next lecture may we will see the other types of manometers.